conservation of plants and animals. Okay, so in this chapter we will discuss about the introduction, that means what is conservation and why it is necessary. Next we will discuss extinction, ecosystem, deforestation, droughts, causes of deforestation, effects of deforestation, biosphere, biodiversity or biological diversity, species, endemic species, wildlife conservation, red data book, and about migration. Okay, so let's start the video. At first we have to know the line what do you mean by conservation. What do you mean by conservation? Conservation means to save something. Okay, to save something for the present situation and also for the future generation. Okay, that is called as conservation. Next we will study about extinction. What do you mean by extinction? Extinction means completely wiped out a species from the earth is called as extinction. Okay, gote species world ru completely wiped out means सरी जिबा ताकू कहा होचे एक्सटिंक्शन. जदि आम एग्जांपल नेबा कहार डायनोसर और आम मूवी रे देखिछन ड्रैगन, तो से ड्रैगन एबे नाहांती कोन पई ना दे ऑलरेडी वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. ओके, से स्पेसीज टोटाली वर्ल्ड रो सरी जाइछि. तो स्पेसीज कोन? स्पेसीज आम नेक्स्ट स्लाइड रे पढिबा. ओके, next we will study about ecosystem. What is ecosystem? All the living components such as plants and animals and microorganisms and non-living components such as climate, soil, river, okay, etc. Total constitute an ecosystem. An ecosystem can be as small as a grassland or a pond or as big as a forest. Okay, गोटे forest ecosystem हेइ पारे नहले गोटे pond ecosystem मध्य हेइ पारियो. जदि हम एग्जांपल pond ecosystem जदि कहिबा तार pond ecosystem रे living organism थांती, that means aquatic plants, aquatic animals थांती. ओके, ता सहित नॉन लिविंग माने सेडी वाटर थाउची, सॉइल भी थाउची, माटी तळे pond रे थाउची. तो एटा होचे गोटे स्मॉल pond ecosystem. जदि हम लार्ज ecosystem कथा जदि चिंता करियो ताले गोटे forest. तो सेही forest रे कोन आसला? जंगल रे विभिन्न प्रकार भेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड भेराइटीज ऑफ एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन. ए पिक्चर रे तमे देखि परथो, तो गोटे जंगल को टोटली नष्ट करा जायछि. तो आमे जंगल को कोन पे नष्ट करछन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए फॉरेस्ट और कलेक्शन ऑफ ट्रीज फ्रॉम ए लैंड एंड देन आफ्टर कन्वर्टिंग द लैंड टू ए नॉन फॉरेस्ट यूज इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. Okay, deforestation. What is the meaning of deforestation? Deforestation means removal of forest or collection of trees from a land and then after converting the land to a non-forest use. Non-forest use example जदि हमें चिंता करिया, that is for housing or for fooding. Okay, जदि हमें से जगह किसी भी construction करछंदी, कौन से इंडस्ट्री, रोड, ओके, तो सही जगह हम कौन कर जंगल को टोटाली नष्ट कर दूसर. तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ये आम बैक साइड पिक्चर तुम देखिपार बैकग्राउंड पिक्चर रे सेठी कौन है गोटे जंगल को पूरा पूरी नष्ट करा जायछि. तो डिफॉरेस्टेशन रो कॉजेस होछि ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल. ओके, दीटा कॉजेस आछे. तो नेचुरल कॉजेस एंड आल्सो ह्यूमन बीइंग्स आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कौन कौन जदि आम चिंता करिया प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. ओके, चाष पई मध्ये आम जंगल को नष्ट करछन. नेक्स्ट बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट मेकिंग फर्निचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल पई तो आम यूज करछन वुड को. ओके, नेक्स्ट नेचुरल कॉजेस आम कहि परिया साइक्लोन, स्टॉर्म, ओके, सीवियर ड्रॉट एंड आल्सो लाइटनिंग, जहाँ फल जंगल निया लगी होछि तो डिफॉरेस्टेशन हो जाए, जंगल नष्ट हो जाउछि. इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन बा जंगल नष्ट होबा द्वारा इफेक्ट कौन पड़ुछि? ह्यूमन बीइंग ऊपर हो कि एनवायरनमेंट ऊपर हो. ओके, तो इफेक्ट होछि आमर तो सबुठ बड़ लॉस होछि. ओके, ह्यूमन बीइंग्स रे सबुठ अधिक लॉस होछि. कोन पई ना देखो डिफॉरेस्टेशन जोगु कोन होछि ना वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ियाला. वर्ल्ड रो कोन होला बा अर्थ रो टेम्परेचर बढ़ियाला. टेम्परेचर बढ़िया कोन पई बढ़ला ना पॉल्यूशन अधिक होला. दैट मीन्स आम जानी पिला बेलू पढ़ी जे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थाए एवं ऑक्सीजन दे थाए. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वर्ल्ड रे बढ़ी जाव दैट मीन्स पॉल्यूशन बढ़ियाला. पॉल्यूशन जेहेतु बढ़ला तो टेम्परेचर बढ़ियाला. जदि टेम्परेचर बढ़ला ताहले रेनफॉल रिडक्शन हो.
ओके नेक्स्ट रेन साइकिल बा वाटर साइकिल ऊपर हैम्पर हम ओके जदि वाटर साइकिल ऊपर हैम्पर है ताहले कौन हम जो सॉइल रे जो वाटर एबिलिटी कमी जीव जहाँ फल ग्राउंड वाटर लेवल रेड्यूस हम ओके दीज आर द इफेक्ट्स नेक्स्ट आम पढ़िया ड्रॉट कौन ओडिया कहूँ मरुड़ी द इंक्रीज टेम्परेचर alters the water cycle and leads to reduction of rainfall okay increased temperature जो दिन को दिन टेम्परेचर हाई हो चलती जहाँफल कौन रिडक्शन ऑफ रेनफॉल रेड्यूस हो जाऊँ दिस रिजल्ट इन अकरेन्स ऑफ ए सिचुएशन कॉल्ड एज ड्रॉट और मरुड़ी आम कहते जहाँफल कौन जमी पूरा पूरी सुखी जाऊँगी आम जानी तो नेक्स्ट पढ़ा डेजर्टिफिकेशन ये जो ड्रॉट हूँ मेन रिजन हूँ डेजर्टिफिकेशन बा गोटे सॉइल को गोटे फर्टाइल सॉइल को गोटे उर्वर माटी को डेजर्ट रे कन्वर्ट करने मेन दायी हूँ कि ड्रॉट ओके ड्रॉट होगा द्वारा कौन है देख आम पढ़ले कौन रेन वाटर रिडक्शन हम और रेड्यूसिंग ऑफ द रेन वाटर जहाँफल कौन है सॉइल रे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमी जो सॉइल कौन भाई पानी टोटाली पड़ला ना जदि से सॉइल वाटर एबिलिटी कैपेसिटी कमीगला और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमीगला जहाँफल कौन हम तार जो अपर लेयर सॉइल अच्छी से कौन हो पूरा पूरी सुखीज आउ से अपर लेयर सॉइल रे जो फर्टाइल कैपेसिटी अच्छी सी कौन ना कौन कारण जो नष्ट हो ओके जदि आम कह विंड जो होता है उड़ीकी पलैब ओके कि जदि हेवी रेन फल है धोईकी पूरा पलैब अपर लेयरटा कम ना से अपर लेयरटा पूरा पूरी हालुक हो क्लीयर तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजर्टिफिकेशन ओके डेजर्टिफिकेशन मेनली दायी कि ह्यूमन एक्टिविटीज ओके एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन आम जदि जो चाष कर प्रॉपर इरिगेशन करवा ना इरिगेशन उपर आम फास्ट चैप्टर साइंस अच्छी तो नेक्स्ट पढ़िया कौन बायोस्फीयर व्हाट डू मीन बाय बायोस्फीयर the part of the earth in which living organisms exist or that supports life is known as biosphere क्या कहबा the part of the earth in which living organism exist जो जगह कि living organism माने बंची पारंती ओके supports life is known as biosphere तो biosphere रे कौन होइथियो देखो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से जगह रे रहितांती ओके नेक्स्ट हम पढ़िया बायोडाइवर्सिटी तो जो बायोस्फीयर एवं जो आम पढ़ले से बायोस्फीयर रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके से रे एंड देयर इंटर रिलेशनशिप ओके देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लियर The biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment is called as biodiversity. Okay, clear? Next we will study about species. The species कौन a group of population or populations whose members have common characteristics and are capable of interbreeding among themselves to produce fertile offspring. Okay, जो ग्रुप रो कौन होते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओके एबल टू रिप्रोड्यूस एंड एबल टू प्रोड्यूस एन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज व्हाट स्पेसीज ओके क्लियर नेक्स्ट नॉर्मली मेंबर ऑफ ए स्पेसीज ब्रीड एमंगस्ट देमसेल्व्स एंड नॉट विथ मेंबर ऑफ अदर स्पेसीज गोटे स्पेसीज रो केवल सही स्पेसीज रो मेंबर मानक सहित ही रिप्रोडक्शन करि पारंती क्लीयर जमी आम जो एग्जांपल ना गोटे आंब गछ जो चिंता करिया मैंगो ट्री रे केवल मैंगो ही होता है ओके अन्य कौन फ्रुट्स आम चाहिए प्रोडक्शन करें कौन पे ना स्पेसीज चेंज हो क्लीयर नेक्स्ट पढ़ा आम कौन नेक्स्ट पेज आम पढ़ा एंडेमिक स्पेसीज व्हाट इज एंडेमिक स्पेसीज द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पेसीज जो स्पेसीज केवल गोटे जगह ही देखा जाए दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पेसीज क्लीयर होता है से जो एंडेमिक स्पेसीज से केवल से गोटे स्टेट ही पारे गोटे रीजन ही पारे गोटे प्लेस ही पारे गोटे कंट्री भी हो पारे ओके फॉर एग्जांपल इन सतपुरा रिजर्व और इन पंचमारी रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश आम से देखा जिएंट स्क्वारेल देखा ओके फ्लाइंग स्क्वारेल देखा
वाइल्ड मैंगो देखा दीज आर द एंडेमिक स्पेसीज ओके नेक्स्ट आउ गोटे अच्छी एंडेंजर स्पेसीज ओके विषय पढ़ा एंडेंजर्ड स्पेसीज जो स्पेसीज द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज नंबर इज रेड्यूसिंग टू ए लेवल वेयर दे मे नो मोर एक्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पेसीज ओके जो स्पेसीज दिन को दिन सरी सरी चलती ओके सर लगी वर्ल्ड रु दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पेसीज ओके जमीक आम जो एग्जांपल ना बेंगल टाइगर स्नो लियोपार्ड ब्लैक बक इंडियन बाइसन एटसेट्रा आर सम ऑफ द फौना ऑफ इंडिया हुज नंबर हैज okay vanished to or diminished to a level after which they may get extinct किछि दिन पर से माने सरी जिवे ओके दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पेसीज क्लियर एबे पढ़िबा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कौन पे दरकार ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड्स इंडल्जेंस इट इज इंपोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन सहित वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन निहाती होगा दरकार तो क्या जो होता है मेनली मेन काइंड और ह्यूमन बीइंग जो ही जहाँ सब नष्ट होता है ओके वाइल्ड लाइफ इज इंपोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर जो बैलेंस नेचर बैलेंस मेंटेन करने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन निहाती भाव दरकार ओके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए रीजन सम प्रोटेक्टेड एरिया हैव बीन सेट अप द प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क्स बायोलॉजिकल रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओके जदि हमें फ्लोरा और फौना व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना ओके फ्लोरा एंड फौना मीन्स टोटल एनिमल किंगडम ओके फौना मीन्स टोटल एनिमल किंगडम ओके एंड फ्लोरा मीन्स टोटल प्लांट किंगडम और प्लांट सिस्टम को फ्लोरा कहुच्छे और एनिमल सिस्टम को फौना कहुच्छे क्लियर तो यही जो प्रोटेक्टेड एरिया गुड़ा करागला दैट मीन्स नेशनल पार्क हो कि बायोस्फीयर रिजर्व हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो यही जगह गुड़ाक prohibited here like killing and poaching of animals or poaching of animals that means animal को मारिबा filling of trees गछ लगेबा दरकार नहीं कि गछ को काटिबा दरकार नहीं that means they don't even allow grazing plantation cultivation etc okay सही जगह टोटली किछि भी allow नहीं okay at first we will study about biosphere reserve. What is a biosphere reserve? It is a extended protected land meant for the conservation of wild animals and plants. Okay, ये होचे सब माने बहुत बड़ा एरिया है जो थरे कि conservation of wild animals and plant दुईटा जाको protection दिया जाए. It is also meant to restore the traditional life of the tribals residing in the area. सही जगह जो traditional life व tribals माने रुहंती से माने को मध्य protection दिया जाए. The biosphere reserves maintain the biological diversity of the area. A biosphere may consist of other protected areas such as national park and sanctuaries. Okay, गोटे बायोस्फीयर रिजर्व एते बहुत बड़ा ही थाए जो थरे कि से गोटे नेशनल पार्क को हे पारे नले गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मध्य कंसिस्ट करथाय. फॉर एग्जांपल पंचबारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क कॉल्ड एज सातपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोन एज बोरी एंड ऑल्टमारी. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुझीगला बायोस्फीयर रिजर्व कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन देख दे आर द प्रोटेक्टेड एरियाज व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. इट मेनली वाइल्ड एनिमल मानक प्रति ध्यान दिया जाए. ओके, प्रोटेक्शन दिया जाए. सेंचुरीज आर प्लेसेस फॉर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ओके, तो दंडनीय अपराध. ओके, ए सेंचुरी मे बी रिजर्व्ड नेचुरल एरिया meant for the preservation of and development of threatened or endangered species. एबे endangered species विषय कहली. ओके, से जगह endangered species मान को मध्य प्रोटेक्शन दिया जाए. फॉर एग्जांपल देयर इज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर राइनोसर्स इन आसाम. आसाम रे जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि सेठी काहा को प्रोटेक्शन दिया जाए राइनोसर. इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. क्लियर. नेक्स्ट, द सेंचुरीज इन इंडिया हैव ब्यूटीफुल एंड यूनिक लैंडस्केप dense forest, bushes in the delta of big river and mountain forest to protect the animals in the natural habitat. Okay, next we will discuss about natural park. Natural park reserve is large and diverse enough to protect the whole set of ecosystem. एडी कौन हो इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन दिया होची. क्लियर. आम आगु पढ़ले बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ी कौन करा ना गोटे लार्ज एरिया जोड़ी कि नेशनल पार्क ता सहित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य इंक्लूड थांती. ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ी कौन हो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए. बट एटी नेशनल पार्क सॉरी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मान को प्रोटेक्शन दिया जाए से जो सेंचुरी. ओके, तो नेशनल पार्क रे किंतु गोटे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन दिया जाए.
National parks preserves flora, fauna, landscape and historical objects of an area. Okay, historic object जहाँ सब से जगह देखा जीवो ताको मध्य प्रोटेक्शन देखा दिया जाए. Okay, for example in Satpura Natural Park rock shelter जोड़ा कि हमर जो आद्य मनुष्य मानक थिला. Okay, rock shelter and rock paintings are also preserved along with flora and fauna विषय भी कहले. Flora means plant kingdom and fauna means animal kingdom. एमान को प्रोटेक्शन देबा सहित से जो हिस्टोरिक प्लेस अछि से मान को मध्य प्रोटेक्शन दिया जाय. Next we will discuss about red data book. Okay, what is the red data book? Red data book means कौन जो बुक रे endangered species विषय that means plant हो कि animal हो सेमान को विषय डाटा कलेक्ट करी रखा जाए that is called as red data book. The source book, okay, here is the point. The source book that is used to keep a record of endangered species of plants and animals and other species existing with the territory of the state or country is called as red data book. Okay, it is or. Next, the red data book is maintained by the International Union for the Conservation of Natural Resources, IUCN. That is the main question. Okay, IUCN full form. It contains the most updated information of the global conservation status of a species. Gote species ro most updated data एमान पाखरे थाए. That means red data book रे रही थाए. Next टाइम पढ़िबा माइग्रेशन मीन्स कौन गोटे जगह अन्य जगह को स्थानांतरित हवा. ओके, दैट इज माइग्रेशन. ओके, बर्ड्स एंड एनिमल्स ट्रैवल फ्रॉम देयर ओन हैबिटेट टू ए डिफरेंट हैबिटेट ड्यू टू सेवरल रीजन्स एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर. गोटे ईयर रो गोटे सर्टेन पीरियड रे बा किछि मास पयली से माने गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रांसफर होइतन बा जगह परिवर्तन करथन. दे आर कॉल्ड एज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन and they are called as जे कि migrate करंती they are called as migrators. Okay, the species that migrate are called as migrators. Clear? They migrate to avoid suffering from thrilling heat or cold that imparts a tremendous impact on the availability of food or certain species. गोटे species पाई होले समान जदी धन्य food availability कमी होला. ओके, नहले समान को क्लाइमेट कंडीशन जदी सुइटेबल न होला तले समान आ गोटे जगह को चेंज हेकि जानती. जेमिति कि आमे एग्जांपल आमे जदी कहबा ओडिसा रो चिलिका तो सेठी कौन होची ना बहुत दूर रो साइबेरिया एरिया रू मध्य पक्षी माने बा बर्ड्स माने हमर ओडिसा चिलिका को आसथांती ठंडा दिन कोन पे ना से साइबेरिया रे बहुत ठंडा पड़ी थाए. ओके, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो से बॉडी को नॉर्मल रखिया पई बोले से माने बहुत दूर को वर्षर किछि मास पई बोले जाइथांते आ थरे पुनी से माने निजरी को चली जानते. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज माइग्रेटर्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. क्लियर? नेक्स्ट, वेज टू कंजर्व द बायोस्फीयर. आम कौ प्रोसेस अनुसार कौ वे अनुसार आम बायोस्फीयर को कंजर्व करें. ए हेल्दी बायोस्फीयर इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द हेल्दी सस्टेंसेस ऑफ द लिविंग बीइंग्स लिविंग इन इट. ओके, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कीप इट हेल्दी, क्लीन एंड बिहेव वेल विथ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर रे जो लिविंग बीइंग्स थाते दैट मीन्स प्लांट हो कि एनिमल हो ताको आमे वेल ट्रीट करबा निहाती भाबे दरकार. एवरी स्पीसीज इन द बायोस्फीयर इन द interdependent on one another, therefore extinction of any species can put the healthy living of the other species at stake. Okay, तो सब प्रकार एनिमल आ प्लांट परस्पर ऊपर डिपेंडेंट होइके अछंती. तो जदि भी किछि कौन सी भी गोटे क्षेत्र में जदि गोटे प्लांट और एनिमल सरी जाउछे दैट मीन्स से एनवायरनमेंट ऊपर बैड इफेक्ट पकै थाए. क्लियर? तो चैप्टर सरी गला. धन्यवाद.